बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle JDeveloper 12.120 in Windows 10 InshaAllah quickly. We have already installed Oracle Database 12c. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle JDeveloper 12.120 को इंस्टॉल किया जाता है Windows 10 में जल्दी से। Oracle Database 12c पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। Furthermore, this is the download link for Oracle JDeveloper 12.120. ये Oracle JDeveloper 12.120 का downloadable link है, and you can download the latest Java from this URL, और आप Java का latest version इस link से download कर सकते हैं. However, the Java recommended for Oracle JDeveloper 12.120 is Java 8. Oracle JDeveloper 12.120 का मतलूबा Java का version Java. So now first create a folder with the name 12.120 JDeveloper 12.120. सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे JDeveloper 12.120 के नाम का. Then cut files of JDeveloper 12.120. कट करेंगे JDeveloper 12.120 की downloadable files and paste them here, और उनको यहाँ चस्पा करेंगे. Now select both files, right click and hit extract file option. फाइल्स को मुंतखब करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल और एक्सट्रैक्ट हेयर का इंतखाब करेंगे. सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट हेयर ऑप्शन. So now it will extracting. अब ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है. Now run the setup with administrator rights. अब हम सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स के साथ. Now hit next button. Next का बटन दबा दीजिए. I do not want to receive any security updates, so the option will be escape auto update and hit next button. मैं कोई security updates नहीं लेना चाहता, तो ऑप्शन escape auto updates रहेगा. Next का बटन दबा दीजिए. Select your Oracle home while clicking the browse button. अपना Oracle home का इंतखाब कर लें. ब्राउज का बटन दबाने के बाद I am creating a new folder for my Oracle home. मैं नया फोल्डर बना रहा हूँ अपने Oracle home के लिए. Now hit next button. Next का बटन दबा दीजिए. Now hit next button. Next का बटन दबा दें. Now hit install button. Install का बटन दबा दीजिए. Installation is complete. Hit next button. Installation complete हुई है. Next का बटन दबा दें. Now option will be start JDeveloper with default setting. Hit finish button. Option start JDeveloper with default setting ही रहेगा. Finish का बटन दबा दीजिए. Now select Studio Developer all feature option.
and do not uncheck this if you want to appear this window again and again, but if you do not want to appear this window again and again, then uncheck this and hit OK बटन। ऑप्शन जो है वो स्टूडियो डेवलपर और फीचर रहेगा। इस स्क्रीन को अनचेक नहीं करें अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन बार बार आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार ना आए तो इसको अनचेक कर दें और ओके का बटन दबा दें। नाउ हिट एसक्यूएल बटन, एसक्यूएल का बटन दबा दें। नाउ हिट प्लस बटन, प्लस का बटन दबाइए। डिफाइन कनेक्शन नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, सेट and JDBC port from your choice. Connection name, username, password, host name, set, JDBC port आप अपनी मर्जी से दे दें। However, connection type will be Oracle JDBC and driver will be thin. Connection type जो है वो Oracle JDBC होगी ही रहेगा और ड्राइवर थिन रहेगा। हिट टेस्ट कनेक्शन बटन, टेस्ट कनेक्शन का बटन दबा दीजिए। कनेक्शन टेस्ट सक्सेसफुल, कनेक्शन टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। हिट ओके बटन, ओके का बटन दबा दीजिए। हिट ओके अगेन, दोबारा ओके का बटन दबा दीजिए। नाउ यू कैन यूज एसक्यूएल क्वेरी हियर एज वेल। आप एसक्यूएल की क्वेरी भी यहाँ पे चला सकते हैं। Oracle JDeveloper 12c has available. Oracle JDeveloper 12c अवेलेबल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।